Okay. खोल लिया है जल्दी. Hi guys, I'm Mahi. Welcome back to my channel. So in today's video, we gonna talk about URBANIC. Title तुमने पढ़ लिया होगा, but this time they sent me this huge PR box, you guys. इसमें ना उनका नया knitwear collection है, and as you can see, I haven't opened it, and it's too heavy. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी उन्होंने भेजा है ना उसका फर्स्ट रिएक्शन हो और तुम लोग ऐसा लाइव देखो वीडियो पे. सो वी गोना अनबॉक्स दिस क्विकली एंड आई एम गोना गिव यू अ क्विक ट्राई ऑन haul of all these items that they have sent. By the way, उनका जो न्यू knitwear collection है ना, it's bomb. There are so many more things in my wish list, but let's quickly try these ones. अभी वैसे अहमदाबाद में ठंडी आई नहीं है, but still I'm very excited for all these clothes. So before we start the video, मैं ना sizes और जो भी prices है वेबसाइट पे अवेलेबल वो सब क्या बोलते हैं स्क्रीन पे डाल दूंगी. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, एंड अगर कोई डिस्काउंट कोड अवेलेबल होगा मेरे पास वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी. बट दिस इज द फर्स्ट knitwear that they have sent. It's a super cute and oversized sweater, you guys. ये बहुत प्यारा लग रहा है. ये एक lilac color में है, like the whole sweater, and it's a cropped sweater. Plus इसमें सा red and beige का combo है. Look how cute is this, right? And I think ये ऐसा Christmas पे भी बहुत प्यारा लगेगा sweater with like a Christmas hat. I think I'm gonna इसे संभाल के रखूंगी इसे क्रिसमस के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार. वेरी क्यूट, एंड द क्वालिटी, माय गॉड, द क्वालिटी इज so good. Love it. Okay, so this is like a basic cardigan sort of, and it's in like black color. काफी basic है, cute सा है. The fabric is like very soft. I hope you can figure it out. Like the fabric is like actually very soft and बहुत ही cute है ये. Like it's cropped and it's a basic, and I think everyone should have this in their wardrobe. ये तो मतलब you can use it as a cover up also on like a basic dress or something. जो तुम्हारे से strappy tops होते हैं summer के, उसके ऊपर भी we can wear it as a cover up. And ये खुद में भी बहुत cute तो top है ही. Guys, एक बहुत ही मस्त रेड मरून कलर में. Oh my god, we have gotten a super cute cardigan slash top. I mean, look at the buttons. They are so cute. मस्त ऐसे गोल्ड बटन डिटेलिंग है, एंड ऐसा पफ शोल्डर है इसके. Of course full sleeves. It's so cute. It's a cropped है इसका स्टाइल, एंड let's see the size. इसमें one size लिखा है, तो I think एक ही size आता होगा. It's quite stretchy, तो of course काफी size इसमें fit आ जाएंगे. But यार ये बहुत ही ज़्यादा cute है, and I think ये भी हम Christmas के लिए save कर सकते हैं, right? ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है. Again, it's like a cardigan, like पूरा button down है, तो इसको भी हम as a cover up बहुत सारी चीज़ों के साथ use कर सकते हैं. Quite soft. Look at the pattern. That is also really beautiful. बहुत सही है. Next top slash knitwear that I have is this black one. ये मेरे को लग रहा है ना, ये तो मैं अभी भी पहन सकती हूँ, क्योंकि of course this is like काफी, तुम देख सकते हो बहुत सारे इसमें holes हैं, it's see through. and इसको अगर मैं किसी क्यूट सी ब्रालेट के ऊपर भी पहनूं तो बहुत मस्त से हवा भी पास होती रहेगी. quite ventilated and मस्त लगेगा ये, right? This is like again a very basic yet elevated piece to have in your wardrobe. मेरे को ना ऐसे स्पेशली इन विंटर्स आई लव वेयरिंग ओवरसाइज्ड स्वेटर्स और टॉप्स. उसके नीचे तुमने कोई स्ट्रैपी टॉप पहना है या ब्रालेट पहनी है, इफ इट्स नॉट दैट कोल्ड, तो बहुत सही लगता है. Let me know in the comments if you also like such kind of tops, because I love them. So I really wanted कि इस बार ना विंटर वार्डरोब में कलर्स होने चाहिए यार. So I also got this yellow one. This is again a button down, like इसका पूरा यहाँ तक बटन है, तो तुम इसको as a top भी पहन सकते हो, but you can definitely wear it as a cardigan also. ये भी बहुत मस्त क्वालिटी का है. like you see इसका जो पैटर्न है, it's ribbed, it's wool,
and it just looks so good. I think I will wear it with like a white pants and white bralette or white strappy top inside it. तो ये बहुत ही ऐसा फेमिनिन सा लुक निकल के आएगा इसका, एंड काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है. लाइक यू नो इमेजिन इट विद पर्ल्स एंड ऑल, बहुत क्यूट लगेगा, राइट? यू कैन सी हाउ इट लुक्स ऑन मी. लेट्स सी व्हाट साइज दिस इज. या दिस इज ऑल्सो वन साइज, तो ये एक ही साइज में आता है. अगेन इट्स क्वाइट स्ट्रेची, तो काफी सारे साइजेस तक इसको तुम फिट कर सकते हो. आई थिंक ये मेरे को देखते हैं मेरे को कैसे फिट आता है. आई विश ये मेरे को थोड़ा लूज सा फिट है, लाइक नॉट टू टाइट, तो ज्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज आई रियली वांट टू वेयर इट एज अ कवर अप. So we get like a PDF to choose from, and I selected some of the pieces that I really liked and they sent it to me. So yeah, I had some idea कि मुझे क्या आने वाला है, but still I was excited. Okay, but I don't know if you remember this. ऐसा कुछ ना Kendall Jenner ने पहना था, I think last winters में in blue. So this is like a very मस्त ऐसा फर वाली वूल का इन्होंने नीचे स्ट्रैपी टॉप दिया है with a matching oversized cardigan. You guys, उल्टा पकड़ा है मैंने, but look at it. This is so cute. प्लस ये जो कलर है ना, ये पिंक इतना मस्त लगता है. मुझे लगता है कि अब हमें किसी ठंडी जगह ट्रिप प्लान कर लेनी चाहिए बिकॉज मेरे को बहुत क्यूट कपड़े भेज दिए ऑर्गेनिक ने. एंड ये ना बड़े सारे कलर्स में अवेलेबल है. आई थिंक ये ब्लैक, ब्लू, रेड में भी अवेलेबल है, तो ये बहुत मस्त लगेगा. यू कैन सी हाउ इट लुक्स ऑन मी. आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है. ओके, सो हु रिमेम्बर्स द रेड वाला कार्डिगन जो मैंने तुम्हें दिखाया था, उसमें वाइट भी आया है हमारे पास, एंड इट लुक्स सो क्लासी लाइक विद द गोल्ड बटन्स, एंड अगेन द पैटर्न इज सुपर क्लासी. इट्स क्रॉप्ड एंड बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली वाइट, कैमरा पे लग रहा है पर ये थोड़ा ऑफ वाइट में जा रहा है. You can see how it looks on me. I think ये दोनों ना बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहे हैं. And if you have like a white fitted mini skirt or something, I think white बोल रही हूँ, ऑफ वाइट, लाइक बिल्कुल मोनोक्रोम होना चाहिए. अगर सेम उसका कलर का होगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा. लाइक इट विल गिव लाइक अ Chanel dupe vibes completely, very rich money vibes. And इसके साथ भी imagine pearls with this. I mean complete old money aesthetic, right? बहुत सही लगने वाला है ये. एक वाइट श्रग है, कार्डिगन है, whatever you wanna call it, but इसमें बटन्स नहीं है, तो ये श्रग ही मैं इसको बोलूँगी, like a woolen shrug. And ये बहुत ही सॉफ्ट सी वूल से बना हुआ है. It gives me like मेरी किसी ग्रैंडमा ने इसको बनाया है, बिल्कुल इसका वैसा वाइब है. It's so cute and it's like a good cover up to take it on your strappy tops or strappy dresses. बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार ये. It's so comfortable. I think ये भी ऐसा वन साइज ही होगा. इसका टाइप देख के तो लग रहा है, but let's see. No, it has sizes and they have sent me medium in this. I am happy with it, medium, because I told you that I like oversized stuff, especially like cover-ups. तो ये like leggings के साथ भी बहुत मस्त लगेगा. You can see how it looks on me. Okay, तो दो चीजें और है. I am like होती हैं. Sorry. I am okay. I'm excited. Let's see the first thing we have. Okay, so this is like a cropped vest. Basically ये बहुत ही उसकी जैसे टैंक टॉप्स होते हैं ना, लूज उसकी तरह, but this is like completely knitted and ये मस्त ऑफ वाइट स्लैश थोड़ा सा बेज शेड में जाता हुआ है. How pretty is this? Like I imagine this with like black bralette, black leggings and some boots and like a black trench तुमने इसे ऊपर से पहना हुआ है और maybe a leather jacket, तो ये बहुत मस्त नहीं लगेगा. This is like very cute and the quality, you guys, I am not even kidding. ऐसा नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि gift आया, but the quality is actually really good. This is the palette that I absolutely love, like beige, white, black, like वो बहुत पसंद है मुझे. You can see from my outfit also, I really like
very like toned down colors these days, but I still wanted to have some colors in my wardrobe क्योंकि कभी कभी महीने में एक दिन ऐसा आता है तब मुझे लगता है बहुत कलरफुल ड्रेस करना चाहिए. So we have options for that too. Okay, next we have this top. This is a basic like ribbed top. You can see, and I think जो मुझे देख के समझ आ रहा है ये वन शोल्डर टॉप है, तो लाइक ऐसे चोकर की तरह आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. बहुत स्मार्ट लगेगा ये. यू कैन सी साइड में कैसा लग रहा है मुझ पे. आई एब्सोल्युटली लव इट. ऐसे जो बेसिक टॉप्स होते हैं ना, they last so much and you can pair it with so many different things. I feel तो ये मेरे को हमेशा लगता है कि ये वाला भी ले लेती हूँ, ये वाला भी ले लेती हूँ. इनफैक्ट मैं ना अभी सरोजनी भी गई थी, जब मैं दिल्ली गई थी. I have gotten like such cute tops. Just have to film that video quickly. बहुत टाइम हो गया है but ठीक है. Okay, now we have come to our last top, which is a tube top actually, and it's super cute. Look at this. यस, इसके ट्यूब टॉप पे ना बहुत ही मस्त से फ्लावर्स बने हुए हैं. एंड ये मैंने इसलिए मंगाया है बिकॉज आई रिसेंटली गॉट अ चोकर फ्रॉम H&M. मैं इसके साथ पहन के दिखाऊंगी तुम्हें. मैं क्या बोलूँ, ऐसा बड़े से फ्लावर वाला चोकर आता है ना, तो आई वेयर दिस एंड दैट. इट्स गोना लुक सो क्यूट. एंड इमेजिन लाइक अ जिस मैंने से शोल्डर्स पे ट्रेंच कोट या फिर लेदर जैकेट डाला हुआ है, बस लाइक नथिंग. आई एम नॉट वेयरिंग इट बट it's just looking so sexy with like a maxi skirt and boots. ऐसे लुक्स बनते हैं, ऐसे लुक स्टाइल हो जाते हैं पता है दिमाग में अपने आप ही. बट यार ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट टॉप है. Absolutely love it. It's again like elevated basic for me, and again I will recommend everyone to have it. Even if you're not comfortable, इसको भी अगर तुम किसी white button down के ऊपर ऐसे पहन लोगे ना. I know मैं white button down के ऊपर तुम लोगों को बहुत चीज़ें recommend करती हूँ पहनने के लिए, but that's like a hack, उसके साथ ऐसा कुछ बहुत कम चीजें होती है व्हाइट बटन डाउन के ऊपर कि तुम उसको स्टाइल करो और वो अच्छी ना लगे. सो यस, हमारा बॉक्स खाली हो चुका है एंड वी हैव गॉटन सम रियली गुड आइटम्स. मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पूरा विंटर वार्डरोब ऐसा रिफ्रेश कर दिया ऑर्गेनिक ने, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज सीरियसली एक भी आइटम ऐसा नहीं आया कि किसी को क्वालिटी हो या फिर अच्छी नहीं लग रही हो देखने में. एवरीथिंग इज सो गुड. सो yeah, I'm gonna link everything down below. तुम कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा फेवरेट आइटम कौन सा था. एंड आई थिंक मेरा एक पुराना डिस्काउंट कोड अभी भी वैलिड है जो मेरा ऑर्गेनिक कोलैब से था, तो वो जरूर ट्राई कर लेना. आई विल फाइंड सम मोर डिस्काउंट कोड्स फॉर यू, एंड वो भी चल रहे हो तो तुम अप्लाई करके खरीद सकते हो अपने लिए. एंड या मेक श्योर दैट यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू गाइस super soon in my next